electronics and communication engineering, and then press digital electronics. This one, digital electronics lab, new one, IIT Roorkee. You press this one, and these are the formats are there: introduction, objective, list of experiment. So you have to press list of experiment. These experiment we have completed. This construction of NOR latch verification, and this one is also, I think, this one is RS flip flop is completed. Okay, so I think we have completed uh, uh, verify the truth table RS flip flop also discussed in the last class. Anyone answer? Hello? This one and this one. Okay, 6. So we are going to experiment 6. This one. Hello? Hello everyone. आवाज आ रही है? शेयर हो रहा है? Yes, ओके. sir. अमान, Yes, sir. आवाज आ रही है बेटा? जी. ओके. Okay. This one. So first of all, we discuss about these verification truth table RS, JK, T and D flip flop using NAND and NOR gates. So you have also read in the theory class also cover this topic. So basically, what is the flip flop? Flip flop is a simple electronic circuit. It is to store the binary numbers. So it was used for the memory purpose. So this is flip flop state can use to store the binary data, binary 0, 1, and stored data can be chained applying varying input. Flip flop latches are fundamental building block and communication other. And this is the types of the flip flops. There are 4 type of the flip flop: RS flip flop, D flip flop, JK flip flop, T flip flop. So I am going to start RS flip flop. R means reset and S means is set, or CP is the clock pulse. So this is the circuit of the flip flop. And so the basic NAND gate RS flip flop circuit used to store the data and thus provide feedback from both of output again back its input. So output is back in another, so to the input, and the RS flip flop actually has 3 inputs: set, reset, and clock pulse. Are here you can see here. This is the block diagram of the RS flip flop, and this is the truth table or of the RS flip flop. This is the input is here and the output is here, and this is the states is here. SR means if the input is S is 0, R is 0, there is no change in the Q, and the state is previous state. There is no change in the state. If put 0, 0, so the output will also, there is no change in the states. And then if the S is 0 and R is 1, means what is this? The output is 0, because if we put 0 and S, R is 1, S is 0, just a minute. So this is reset state, and we put 1 and 0 is here. So output is 1, and it means this is the set state. And then we put the 1, 1 means their forbidden state. So there is the 4 input: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. So you have to, in the practical, in the lab, in the simulation, so you have to prove this state, and through this we put the 0, 0, 0, 1, 1, 0 and 1, 1.
And then next is D flip-flop. D flip-flop has a single data input. This type of flip-flop obtained from SR flip-flop by connecting, just a minute, somebody is waiting. And this is the circuit of D flip-flop. D flip-flop, the type of flip-flop obtained from SR flip-flop by connecting, just a minute, someone is coming. So basically theory portion you have also knows about the theory. So you have to basically all these theories here. The modified clock pulse SR flip-flop is known as D flip-flop and shows below from the truth table of SR flip-flop. We see that the output of SR flip-flop is unpredictable state when the input are same and high. In many practical applications, these input conditions are not required. These input condition can be varied by making them complement of each other. So this is we have short from the D. This is the clock pulse and D is shorted through this S and R. And circuit diagram you can see here. This is the block diagram of the D flip-flop, and the below is the truth table of this state. So these are the input and this is the reset clock pulse output pulse. And if we put 0 0 0 clock pulse, so output with the Q is 0 state and Q is complement 1, means if the 0 the complement Q bar is complement, if the put is 0 the complement Q bar is 1, this is 1 1 and the Q, this is 1 and this is the 0. So this is the complement of this. If we put reset and our clock pulse 0, the output will be 0. If we put and delay is also 0 0, so this is basically 0 and 1, this is 0 0 0 and the output is also 0. The complement is 1. If we put 0 0 1, the output also 0. The complement is 1. If we put 0 1 0 2, this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3 and this is 4. So output no change at this point, and we put 101, the output will be changed at this stage. In the fifth stage, the output will be changed. The output Q is 1 and the Q bar is 0. It is complement of this, and this is the 6110. The output not change. That is 1111. There is no change the output. And next is JK flip-flop. In the RS flip-flops, the input RS1 leads, just a minute. And the JK flip-flop, the input RS1 led to an intermediate input. The RS flip-flop circuit may be rejoined. If both inputs are 1, then the output also are complements of each other shown in this figure table below. So this is the circuit diagram of circuit JK flip-flop, and you can see here this is the clock pulse in the center of this, and K and J, and the output is here Q and Q bar, and this is the trigger input output pre-state next state inference. So these are the truth table of this. And next is T flip-flop is known as the toggle flip-flop. T means toggle flip-flop, and T flip-flop is modified of JK flip-flop. Both JK inputs of the JK flip-flop are held logic 1. The clock signal continuous to change shown in this figure. So this is circuit diagram of T flip-flop, and T flip-flop is clock pulse. T is 0. The rising of the clock, Q and Q bar, and this is 1. There are two states, 0 and 1, and another is no. There are two inputs here. So this is the theory portion, and I am going to start the and you procedure also knows. So this one connect
supply plus 5 volt to circuit. So you know, so I'm going to start directly. So this is verified truth table JK and this one. So first of all we discuss about the SR flip flop. So you can see here, this is, can you see the this one? हेलो, Yes, sir. दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म SR फ्लिप फ्लॉप दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ Yes, है। sir. Yes, sir. Yes, sir. So first you have to press this one, instructions. So what say the instructions? Connect the supply plus 5 volt to IC, switch on the power button. First of all we connect the battery through this, and next it press the switch is for input SR. Switch is on kiye and then switch on states to green of state is red, this one, and apply the clock pulse for clicking the clock switch. Clock click at the button, truth table and corresponding graph input. Repeat the 2 3 4 order. तो ठीक है, दिस वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्या करेंगे, कनेक्ट द सप्लाई। कहाँ से कनेक्ट करेंगे सप्लाई को? पावर सप्लाई ऑन किया तो दिस इज पावर सप्लाई ऑन हो गई। तो इफ वी पुट द 0 0 0 0 तो द क्यू पुट, क्योंकि ये 0 आ रहा है तो आउटपुट पे 1 हो जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। ठीक है, एंड देन पहले बोला, अब फिर स्विच ऑन किया। फर्स्ट कनेक्ट द सप्लाई 5 वोल्ट आईसी, switch on the power supply by press the switch from input SR अब इसको ऑन कर रहा है S और R को। ठीक है, ये ऑन हो गया। ठीक है, SR को ऑन किया, we press the switch, apply the switch on state and switch off state, apply the clock pulse by clicking on, और यहाँ से इसको अप्लाई किया क्लॉक पल्स को। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे ऐड बटन करते, देन प्रेस द ऐड। ठीक है, इस तरह से देन यू हैव टू दिस वन एंड अब 0 0 में पुट करना एंड देन नो चेंज एंड 0 0 0 चेंज एंड देन 0 0 and 0 1 clock pulse, then reset and 0 0 0 1 and 1 0, this is 1 and this one and add this, तो ये clock pulse अप्लाई नहीं किया तो you have to press the clock pulse and then add, so this is the set state and this is 1 and 1 and this is clock pulse is here invalid state. So this is the 4 state are there and this is the clock diagram of y-axis versus z-axis. Just a minute. जी सर, हेलो, वालेकुम सलाम सर। क्लास ले रहे हैं अभी 10 मिनट और लगेंगे, 10-15 मिनट देख लीजिएगा, 10-15 मिनट तो रुक जाइए, फिर 11 बजे तक चलते हैं। हाँ वो तो कंप्लीट हो गया, तैयार है, साथ ही चलते हैं, बस 10-15 मिनट रुक जाइए। ठीक है, हाँ 15 मिनट बाद 11 बजे। ठीक 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 ठीक। हेलो, Yes, sir. ओके। तो इस तरह से ये कंप्लीट कर लेंगे। देन यू हैव टू प्रेस दिस इज द ट्रुथ टेबल एंड दिस इज द क्लॉक डायग्राम ऑफ दिस वन। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, समझ आया सबको? एनी Yes, sir. प्रॉब्लम?
I am going to start the next. तो दिस इज कंप्लीट, 6 इज completed. एंड नहीं, अभी तो इसमें और भी है. तो आई एम, दिस इज द एस आर फ्लिप फ्लॉप एंड नेक्स्ट इज डी फ्लिप फ्लॉप. तो दिस इज द सर्किट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप. कैन यू visible this one D? Hello. Yes, sir. Okay. So this one is count, connect the supply. So we press this one. Okay. ठीक है, जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे और यहाँ ऐड, यू हैव टू प्रेस द ऐड बटन. तो दिस इज द सीरियल नंबर 1000. नो चेंज इज हेयर. And this one is change this one, and clock pulse this set state, and this clock pulse reset state, and two is, इसमें यही होगा, बस इतना ही होगा इसमें. This one is this one. change आएगा and then change state. Okay. ठीक है. तो इस तरीके से आप इसको भी कर लेंगे, नेक्स्ट को डी को. एंड देन इज थर्ड इज जेके फ्लिप फ्लॉप. तो जेके फ्लिप फ्लॉप में इंस्ट्रक्शंस: कनेक्ट द सप्लाई, प्रेस द स्विच फॉर इनपुट जे एंड के, ऑन स्टेट इज ग्रीन एंड रेड इज द ऑफ स्टेट. आफ्टर जे एंड के प्रेस क्लॉक स्विच, the clock switch is on state and clock switch off state. Click add button, update truth table and corresponding graph for different. Repeat the step 2 3 4. Further input, after obtaining the truth table, click print this one and we press this one. The supply is connected in this circuit, and then is to clock pulse is here. So at this one there is no change, and we, this clock pulse is added, there is no change. 0001 clock pulse is also, apply the clock pulse. Without clock pulse they cannot work, and we add the clock pulse. This is reset, and this is 0001 10 and 01. Another is 1, this one set state, and 000010, and this is 1 and 1, and put here, and this add this, and this is toggle. Okay. So this is the simulation of experiment to perform the logic gate through this kit. Only one simulator is here. Okay. Next is T flip flop. In the T तो हो गया शायद, T नहीं, T नहीं. And in the T flip flop, to you press the power supply button is on, and after that you put the clock pulse and add this, no change, and you, this clock pulse is here, and then press this, no change, and this one is 1 and clock pulse is also 1, add this, toggle. So these are the 4 type of RS, JK, T and D flip flop using NAND and NOR gate. Through we have simulate this one, and this is the truth table of this, and the timing diagram also is completed. Okay. Any problem? कर लेंगे No, बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम? no, sir. कर लेंगे ना, आसान है बहुत. तो ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट इज ये सर, बस 10-15 मिनट में क्लास लेके चले.
अच्छा, ठीक है, चले जाइए। बस 10 मिनट में चल रहे, अभी क्लास खत्म ही हो रहा है। अच्छा, चलिए, ठीक, चलिए, या ठीक है, आप बढ़िए, ठीक है, हम जाइए, अभी जाइए, आप जाइए। ठीक, 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 जाइए, जाइए, जाइए आप। हेलो। Yes, sir. ओके, ओके यार, वो फोन आ गया सर का, सर में जाना था साथ में। तो दिस इज कंप्लीटेड। So and thus this is experiment number is finished. So next is experiment is 7. Okay. So this is 6 experiment is completed, and I am going to start the 7 experiment. So 7 is design and verify 4-bit serial in parallel out shift register. So we have, first of all, this one is designing and verify 4-bit serial parallel output shift register in serial in parallel out, SIPO. This is the short form of serial in SIPO, serial in parallel out shift register. The data is stored in the register serially. So it is retrieved from its parallel fashion. Figure shows in this one shift register sensitive to positive edge of the clock pulse. Here the data word which is bit stored in the serial manners, and the first flip-flop D to FF1, it is also seen that input all the flip-flop except the first flip-flop FF1 are driven by the output of the preceding one, like the input FF2 is driven by the output FF1. In this kind of shift register, data stored within the register is obtained as a parallel output data word and individual output pin flip-flop. So n-bit serial in parallel out right shift register, you can see here data in clock and clear ff1 ff2, this is the output words. So in general the register contain a clearly by applying high on the clear. Hello everyone, आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am talking about the design and verify 4-bit serial and parallel shift register. So you can see here, this is the so many, there are up to ff2. So though there are so many inbuilt in the register as here, and the output received from this. So in general, the register contain a clearly applying high on the clear pin on all the flip-flop at the initial stage. After this, first bit B1 of the input data word is fed at the D1 pin. This one. So the first flip-flop, the output of the first flip-flop is connected to the second flip-flop. The first flip-flop output, and the second flip-flop is the input, and another is the second one is the output of the flip-flop, and next is D3 is the input of the D3. In this manner we have connected this. Analyzing the same ground, one cannot the n-bit input data what is obtained, this one. So you can see data moment in this shift register shift. So this one, so we put this one B1, and B1 is also is this one, and this is the shift register is shifting one bit one by one in the serial manners. So you can see here, and the next is procedure and simulation. Procedure, this connect the supply to circuit, keep the reset, press preset, and press the clock pulse and observe this data LED Q3, then press add button to add data in given truth table, apply the next data. This is
and we go to simulation procedure. This is instructions. This instruction is here. So you read the instructions carefully. Connect the battery to supply 5 volt to the circuit and keep the reset and preset are as a active high state. The button in active high state and is green, and the button is active low state is red. Applying data at input is switch on state, and off state apply on clock pulse at clock 1. This data at LED Q3. The LED is off state is this one is off state, and LED is on state. It shows the green is Z is glowing. The red means it is LED is on state. If the glowing is off, so this one, the add button, and this same procedure are is here. So first of all we connect the battery and then press this one, and green is this one, applying the data, and input data input is here. This one is green, and clock is this and this. Okay, clock 1 data, clock 0 दिया ये suppose. अब इतना लेट से कौन आया? So we this one had this. So we put here, this is through the battery is connected, and first we press the data input is here, put here, and reset button, set button. If the green light is green, it means the reset button is 1. If we put the 1 and preset is green, it means this one, and clock pulse is also 1. Okay, so this one is 0 0. All the q1 q0 q1 q2 q3, it means this 0. We add this, so this is so and then press only one clock pulse. This is data input is here, and we put 1 and add this, and we put another clock, add this, and we put another clock and add this, and we put clock pulse 4 clock pulses, add this. So this is clock pulses. So you can see here this output will be changed at this q1 q2 q2 according to, and you have to print out this output. So this is the design and verify 4-bit serial in and parallel out shift register, shifting one by one. So according to your input is data input is here, and to reset and preset is pulse is here, and this is the clock pulse is here. So first you have to data, suppose this data input is data is 0. So and this one is 0, this one is 0. ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे बेटा, कोई प्रॉब्लम? सिर्फ इनपुट चेंज करना है, आउटपुट पहले 1 एक बार इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको करके ऐसे चेंज करते रहेंगे और वहां पे चेंज हो जाएगा. इसमें थोड़ा गलती हो गई तो इसलिए वो दोबारा उसको करेंगे सही से तो सही हो जाएगा दोबारा से.
ठीक है, यहाँ पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कैसे कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट द सप्लाई वोल्टेज टू द सर्किट को, एक बार इसको प्रेस करते हैं और कीप द रीसेट सेट एक्टिव हाई, दिस इज द इज ग्रीन। अप्लाई द डाटा इनपुट इज थ्रू दिस बटन, तो जीरो इज ऑफ स्टेट, रेड इज जीरो इज ऑफ स्टेट एंड अनदर इज ग्रीन इज वन स्टेट। प्रेस द क्लॉक पल्स, ऑब्जर्व दिस डाटा Q3, Q3। फिर उसके बाद प्रेस द ऐड बटन एंड डाटा गिवन ट्रुथ टेबल। Apply the next data input and Q2, Q3। फिर वन बाय वन पहले Q3 का डाटा को ऑब्जर्व, वी हैव टू ऑब्जर्व द डाटा Q3 एंड अनदर Q2 एंड Q0, Q1, Q4। वन बाय वन डाटा को ऑब्जर्व करते रहेंगे और उसी तरह से फिर वो बिट वन बाय वन दे हैव टू शिफ्ट इट वन बाय वन। Repeat the same procedure till 3 to 5 till 5 bits appear at the output shift register and the print button and complementary simulation is there. Okay. Hello. यस सर। ठीक है ना, ऐसे क्लॉक साइकिल पुट करते रहेंगे, एक 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 डाटा एक वन बाय वन उधर शिफ्ट करता रहेगा इस तरीके से। डाटा इस तरह से शिफ्ट करेगा वन बाय वन, Q1 का इधर कैसे, तो दिस इज ट्रायंगुलर, उसमें इसका आउटपुट आ जाएगा इस तरह से। सिंपली इस तरह इसको आपको करना है। तो ठीक है, इतना आज काफी है। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। कंप्लीट। अभी मैं नो सर। एंड 7 नो सर। अभी मैं अभी उस पे अभी कर देता हूं, तो ये इस पे आपको सबमिट भी करने हैं। जितने आपके कंप्लीट हो गए, यू हैव टू सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 6 and 7। तो वन बाय वन आप उसमें जो भी प्रैक्टिकल वी आर नोटेड टू सबमिट इट, यू हैव टू कंप्लीट एंड देन सबमिट इट एट द गूगल क्लासरूम। आपका एग्जाम भी है कल, हम सोच रहे हैं एक आपका इंटरनल एग्जाम ले लें, वो गूगल क्लासरूम पे मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और क्विज के क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड, जो इसमें दिए होते हैं यहाँ पे। जैसे अभी हम किस तरह के क्वेश्चन देंगे आपको, यहाँ पे एक टेस्ट होता है, फीडबैक रेफरेंस, जस्ट ए मिनट। दिस इज ऑब्जेक्टिव, क्विज होता है इसमें, क्विज कहाँ है? सर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद कोई भी एक्सपेरिमेंट ओपन कीजिए। अच्छा, उसके बाद आता है, गुड। ये इस थर्ड वाला जो है थ्योरी के बाद सर। ओके ओके। तो दिस टाइप ऑफ ये एक्चुअली में ये इस तरह के क्वेश्चंस हम आपको देंगे। तो यू हैव टू, उसमें 10 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, ओनली हाफ एन आवर। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन द गूगल क्लासरूम। 10 o'clock से 10:30 तक आपका एग्जाम होगा, दोनों ए एंड सी का। बी वाले बच्चों का हो रहा क्लास, नहीं लैब का? सर पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, ए एंड सी को मुझे कराना था, ए एंड सी के 30 बच्चे फर्स्ट। तो तुम्हारा कल एग्जाम है 10:30 बजे से, क्विज हो। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया, ये 7 एक्सपेरिमेंट जो कराए हैं उसमें से किसी से भी आ सकता है, इसको सबको आप प्रैक्टिस कर लो। सर 10 बजे से 10:30 बजे तक? हाँ कोई बात नहीं, सैटरडे तो एग्जाम भी आ गया ना, तो लेना है, क्या हो गया। जी। उसी पे हमारा आपको साढ़े 10 10:30 बजे बजे से मैं सी क्वेश्चन प्रोग्राम दे, की एक्स्ट्रा क्लास है बेटा? 10:30 बजे से सी प्रोग्राम की एक्स्ट्रा क्लास है न्यू स्टूडेंट्स की। अच्छा, तो कैसे सर आप करें? 12 बजे के बाद ही ले लें, फिर 12-1 बजे के बाद। चलो 12 से ले लेंगे, 12 12:30 बजे, 12 से 12 बजे फ्री हो जाओगे? सर नमाज बाद ले लेना आप 1 बजे। अरे भाई मुझे भी और भी काम है ना, सारा दिन मैं थोड़ा ही फ्री रहूंगा। तो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ आपके लिए, अब आपको मैं 10 से लेके 1 बजे तक वेट थोड़ा ही करूंगा, मुझे और भी कुछ काम है। यस सर। अरे फिर क्लास का होगा सर कल, देख लो, दे दो जो रह जाएंगे, फिर उनका बाद में ले लूंगा।
कौन सा टाइम? नहीं, कल 2 बजे तो सर। मंडे में आपका सुबह ले ले, मंडे 9:30 9 बजे से। हाँ सर, मंडे सुबह ली। मंडे 9 से ले लेते हैं। 9 बजे आपका एग्जाम होगा, 9 से 9:30 आपको सबमिट करा देना। बस आपको अपना आप ऑटोमेटिकली आपके उस पे गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट में आपको एग्जाम वहां पे आ जाएगा, उसी में आपको गूगल फॉर्म आएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे, वहीं पे आपको सबमिट कर देने हैं। ओके क्लास सर। लैब वाले उसमें जो भी है, ठीक है। और अपनी जो फाइल कंप्लीट करके रखे हैं सब जो मैंने कराई है, अभी 7th एक्सपेरिमेंट हो गए तो ये कंप्लीट कर ले, ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चंस इस तरह के अपने, ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये इसकी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू।